सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ विद सौम्या। इस चैनल में मैं हर हफ्ते आपके लिए न्यू एंड क्रिएटिव आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड आइडियाज लेकर आती हूँ। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस. So in today's video we are going to make two paintings. So the first one is on a handmade bamboo cane tray and the other one is on a piece of cloth which is fixed to an embroidery hoop. So before we start the video, I just want to say that while I was shooting for this first part of the video, that is the bamboo cane tray, so something went wrong and I actually by chance lost some of the clips which I couldn't recover later, and that is why इस वक्त मेरे पास सारे clips नहीं हैं, but whatever I have, so I have tried to put all of those clips together and let's see how it goes. So without any delay, let's start the video. यहाँ मैंने एक हैंडमेड बैम्बू केन ट्रे ली है. सो आई हैव परचेज्ड इट फ्रॉम द लोकल मार्केट एट अ प्राइस ऑफ आई थिंक 50 और 60 रुपीज़. आपको ये अमेज़न से भी आसानी से मिल जाएगा, बट अमेज़न में ये काफ़ी प्राइसी है. सो मैंने इसके ऊपर पेंसिल से एक स्केच बना ली है. इट्स ऑफ अ लेडी, अ डांसिंग लेडी. बट लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट दिस बैम्बू केन ट्रे. इसका सरफेस काफ़ी अनइवन होता है, तो वाइल यू आर कलरिंग तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है. सो इन दिस केस इट्स ऑलवेज एडवाइज कि आप 2 या 3 कोट ऑफ कलर लगा सकते हो. सो यहाँ पे मैंने जेसो अप्लाई नहीं किया है. सो विदाउट अप्लाइंग जेसो मैं यहाँ डायरेक्टली एक्रेलिक कलर्स लगा रही हूँ. सो आई एम कलरिंग द बेस विद येलो कलर. So once that is done, now I will move to the main element and I will start coloring the clothes of the lady with a red and orange. So now I have mixed orange, white and little bit of yellow to color the face and the hands of the main element. So now it's time to give the painting some detailings. So I have painted some leaves and some small designs on the backdrop. Finally apply a layer of varnish. सो आज का जो सेकंड पेंटिंग है उसमें हमने एक पीस ऑफ क्लॉथ ली है एंड वी हैव फिक्स्ड इट टू एन एम्ब्रॉयडरी हुप. इस एम्ब्रॉयडरी हुप के पीछे आपको एक हल्का इमेज नज़र आ रहा होगा. मैंने पहले भी एक और पेंटिंग बनाई थी, बट देन आई फिक्स्ड इट विद ग्लू और अब आई कांट टेक इट आउट. सो मैंने सोचा कि उसी के ऊपर कपड़ा लगा देती हूँ और दोबारा से पेंटिंग बना लेती हूँ. यहाँ पे मैंने एक बंगाली स्टाइल ढोल बनाया है जो यूजुअली आपको दुर्गा पूजा के टाइम पे हर मंडप पे नज़र आएगा. सो हियर आई एम अप्लाइंग हॉट पिंक कलर फॉर द बैकग्राउंड फर्स्ट.
इस पेंटिंग में द मेन एलिमेंट इज़ ढोल। सो इस ढोल को मैं बहुत ही कलरफुल बनाऊंगी एंड सो आई एम अप्लाइंग ब्राइट येलो कलर टू इट। सो आफ्टर मेकिंग अ फ्यू डिटेलिंग्स टू द ढोल, अब मैं इस ढोल को ब्लैक कलर से आउटलाइन कर लूँगी। Guys, there is one thing that you must know about me is that I'm a big fan of bright colors. So मुझे जब भी मौका मिलता है मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि जो मेरे मेन एलिमेंट है पेंटिंग का उसको मैं ब्राइट कलर से ही पेंट करूँ। And here's the final result.